Every founder knows this fact that entrepreneurship is a long, difficult journey, and especially those initial few years are very, very difficult. The founder is struggling for everything, like he's struggling to find a right co-founder, then he has to build a right set of team, then he's struggling to find an investor, then also he has to make a product which achieves the status of product market fit, right product market fit, for which he need a constant guidance, mentorship, or at least some similar mindset of people who can help him कि भाई आज से 2 महीने बाद या 2 साल बाद ये दिक्कतें आएंगी, अभी से सॉल्व कर ले, अदरवाइज तू फंस जाएगा। ये बताने वाला कोई तो चाहिए, कोई इन्वायरमेंट तो चाहिए। एंड इतने सारे स्ट्रगल के बीच में भी ही हैज टू गो थ्रू द हार्ड, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी, फाइंडिंग कंपनी सेक्रेटरी, देन फाइंडिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और लर्निंग ऑल दोस न्यू jargons which make his start very, very difficult. So there are two kind of startup catalysts, startup incubator and startup accelerators, which help him a lot. But both of these catalysts are structurally different. The kind of support they provide is totally different. What they ask from you is totally different. So let's understand them step by step. Let's clear the doubt, the differences between startup incubator and startup accelerators. पता है हर एक अच्छे कॉलेज या हर एक अच्छे स्टेट विद गुड गवर्नमेंट में एक दौड़ लगी हुई है कि यार मेरे कॉलेज से ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप प्रोड्यूस होने चाहिए या मेरे स्टेट से ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप प्रोड्यूस होनी चाहिए। और उस रेस को जीतने के लिए जरूरी था कि जो आइडिया से एग्जीक्यूशन वाले स्टेज है इसको एकदम स्मूथ बनाया जा सके। मतलब कि फाउंडर सारी भसड़ को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस एग्जीक्यूट करने में फोकस कर सके। तो इसके लिए बनाए गए स्टार्टअप इंक्यूबेटर, और स्टार्टअप इंक्यूबेटर का यही काम होता है। एक अच्छा स्टार्टअप इंक्यूबेटर फाउंडर के ऊपर से सारी टेंशन हटा के उसको बस एक टेंशन देगा कि भाई तू बस अपना आइडिया को एग्जीक्यूट कर, टीम बना, लोगों को ला, स्किल ला, प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट मार्केट फिट ला, कस्टमर इनसाइट्स ला, बस अपना प्रोडक्ट बना और इस बिजनेस को एस्टेब्लिश कर। उसके आसपास की सारी चीजों को एक अच्छा इंक्यूबेटर हैंड होल्डिंग करते हुए उन चीजों को सिंप्लीफाइड कर देगा। एक स्टार्टअप को क्या चाहिए? अर्ली स्टेज में पैसा नहीं होता तो एक ऑफिस स्पेस चाहिए, तो ऑफिस स्पेस स्टार्टअप इंक्यूबेटर देते हैं। फंडिंग चाहिए होती है तो इन्वेस्टर का कनेक्ट लाके देते हैं। ट्रेनिंग चाहिए होती है, ट्रेनिंग लाके देते हैं। बैंगलोर टेक समिट हुआ था अभी, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप इंक्यूबेटर ने अपना स्टेज लिया था। उन्होंने 2.5 लाख रुपए लेके एक अच्छा सा एरिया लिया, वहाँ पे जितने भी उनके इंक्यूबेटेड स्टार्टअप थे उनको वहाँ पे लाया, उनको वहाँ पे शोकेस करा गया ताकि वो जो इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है वो दुनिया को अपना प्रोडक्ट दिखा सके, अपनी कंपनी के बारे में बता सके। तो उनको एक ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस दिलाना, एक अच्छा स्टार्टअप इंक्यूबेटर ग्लोबल लेवल पे प्रेजेंस दिलाने में भी मदद करता है। तो ये हर एक छोटी छोटी इनिशियली जो हैंड होल्डिंग चाहिए होती है कि स्टार्टअप फाउंडर को, वो काम होता है स्टार्टअप इंक्यूबेटर का एक स्टार्टअप को प्रोवाइड करना। आपको लीगल हेल्प चाहिए या नॉन लीगल हेल्प चाहिए? आपको कंपनी सेक्रेटरी चाहिए कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए कंपनी ऑडिट करवाने के लिए? अ गुड स्टार्टअप इंक्यूबेटर विल टेक केयर ऑफ ऑल योर बेसिक नीड। एंड जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि इन बिटवीन मल्टीपल कॉलेजेस एंड इन बिटवीन मल्टीपल स्टेट्स देयर इज अ रेस टू प्रोड्यूस मोस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप। क्योंकि अगर कॉलेज से ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे तो कॉलेज का नाम होगा, एक स्टेट में ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो एक स्टेट की इकोनॉमी बूस्ट होगी। सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दिस इंक्यूबेटर आर एस्टैब्लिश्ड बाय अदर कॉलेज और स्टेट। और फिर पैसा भी इन स्टार्टअप इंक्यूबेटर को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। बट दिस डजंट मीन दैट स्टार्टअप इंक्यूबेटर आर फॉर चैरिटी। They will charge you anywhere between 5,000 rupees to 15,000 rupees per month in the form of incubation fees plus equity. Of course, this vary from a startup incubator to incubator, but they will charge you a good amount of fee for the incubation and all the services that they are going to provide you. Before moving to startup accelerators, if you are watching this video, there is a high probability that you want to start your own venture. You want to do something or whatever you want to do in your life. I just wish that you became successful in that. You make your parents proud. You move ahead in your life, in your journey much faster than what you have planned. And I also need a favor from you, that I also want to experience the same thing in my life. I am trying my best. I know there are lots of problems in my content because I am a new beginner and all those things, but this is a humble request. If you like my content, subscribe it so that I get motivated, so that I also get the same feeling of making my parents proud and I can deliver better content next time whenever I am producing a content or whatever. ठीक है, मैं भी अपनी जर्नी में अच्छा होता रहा। ठीक है, subscribe to unfilteredX by Shivam. I promise I will keep working hard to deliver better content every time you come and watch any video on my channel. Let's get back to our topic again. So you as a founder, you did a great job in getting the product market fit right. But the problem here is you are still struggling with supply chain issues, or maybe branding issues, or maybe your distribution is not getting fixed. So you are struggling. You're not able to reach your right growth number. So you need some kind of startup school which can teach you to how to solve all those issues. Or maybe you need right network where experts are available. So for a particular issue, you can reach out to them and they can help you solve this issue. So you need a startup accelerator which can help you to reach your growth number. So unlike startup incubator, startup accelerator are not going to do the hand holding, but they will give you the right environment and right set of resources so that you get going. For example, you are struggling with MVP, supply chain issue or distribution
distribution issue. They will give you the right set of training, mentorship and guidance. If you need tech support, they will give you tech support. If you want to connect with industry experts, they will connect you with the industry experts so that you can solve your problem. If you are struggling with funding, they will connect you with the network of angel investor and venture capital firms so that your funding issue can be resolved. So इतनी सारी चीजें तुमको फ्री में तो मिलने वाली है नहीं. So definitely startup accelerators are going to charge you some amount of equity. But ऐसा भी नहीं है कि ये इक्विटी के नाम पर किसी से भी इक्विटी लेके इस बहती गंगा में सबको हाथ धोने का मौका दे दे. Unlike startup incubator where whosoever will come will get incubated, but startup accelerators have strict selection criteria. That means if 1,000 people are applying, hardly 10 or 20 will get selected into this accelerator program. That means getting into accelerator, getting recognized by a startup accelerator is itself is a good recognition. All the media attention, all the eyes of investors, venture capital firm will come onto you. You will get the right attention. That means you will get all the help much easier than other people out there in the market. There is another key difference between both of them, that incubation program can be anywhere between 6 months to 36 months, whereas startup accelerator program are hardly 2 weeks to 8 weeks program. A typical example of incubator is NSRCEL, IIM Bangalore का, then Technology Business Incubator, IIT Delhi का. वहीं पर typical example of startup accelerator is Y Combinator and Google Accelerator program. And the good part of Google Accelerator program is that they provide equity free support. So that is a very good advantage. तुमको recognition भी मिल जाएगा, equity भी lose नहीं करनी पड़ेगी और तुमको support भी मिल जाएगा. This is a key difference between startup incubator and startup accelerator. अगर तुमको content अच्छा लगा है तो keep working hard and subscribe to unfilteredX by Shivam.